I can't believe I'm narrating the story like this, but believe me, this is the fact. The Chief Minister of Himachal Pradesh wanted to have samosas. 3 plates of samosas were packed from a 5-star hotel for his consumption. First of all, when the state is bankrupt, why are you calling for samosas from a 5-star hotel? Anyway, after that, by some mistake, the samosas reached his staff instead of him. The Chief Minister was so angry that the state government decided to institute a CID inquiry into how the Chief Minister's samosas went for someone else. As ridiculous as this sounds, this is a real controversy. As ridiculous as it sounds, the Chief Minister of Himachal Pradesh constituted a CID inquiry into why someone else ate his samosas. This is what happened. A samosa has stirred up a storm in Himachal Pradesh, turning into a sizzling recipe for political drama. The order meant for Chief Minister SUKHU'S Singh from a 5-star hotel apparently ended up on the wrong plates, adding a whole new layer to the mix-up. And what happens next? Whispers of a CID probe emerge, raising eyebrows across the state. It all began with a trio of snack boxes ordered as refreshment for Chief Minister Sukhu, but these samosas found their way to SUKHU'S staff instead. It so turned out that one high-rank officer who was in CM's snack plan and handed off the order, leading to a classic communication meltdown. Soon, the snacks intended for the state's leader ended up in the hands of logistics staff. पहले पूरी डीजीपी ने बयान दिया, उसको आप देख लीजिए। और मैं देख रहा हूँ जब से कांग्रेस पार्टी की 40 सीटें हुई है, दोबारा कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन लोटस के बाद जीत कर आई है, तो एक टारगेटेड कैंपेन चल रहा है। What should have been ignored has now ballooned into a full-blown political brawl between the BJP and the Congress party. किस प्रकार की सोच भी कांग्रेस रखती है? अगर समोसा परोसे जाने पर गलती से एंटी गवर्नमेंट कृत्य बताती है तो ये कितनी टॉलरेंट है, ये गवर्नमेंट कितनी प्रोग्रेसिव है, ये गवर्नमेंट कितना बिना विद्वेष की भावना से काम करती है, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही कांग्रेस का मॉडल है, खटाखट मॉडल। Even the DGCID downplayed the incident, calling it an internal affair and accusing the BJP of stirring up trouble for a minor slip-up. इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से, मीडिया वालों से, कि ये CID का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए और ये उचित नहीं है इसको माध्यम बना के किसी को टारगेट किया जाए। From a few samosas to a statewide rage, this samosa scandal reflects the misplaced priorities of the already bankrupt Congress government in Himachal Pradesh. Kaushal Mungta is the Congress spokesperson from Himachal Pradesh. Ram Thakur, former Chief Minister of Himachal Pradesh, is it true that there is a CID inquiry on how 3 boxes of samosas that have been bought from Hotel Radisson Blu for the consumption of Chief Minister Sukhu were given to some members of his staff? You are saying that there is a CID inquiry. What is your information on the CID inquiry into the missing samosas? जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आप ये समोसे जो हैं इस पर आप कह रहे हैं CID इंक्वायरी हुई है, क्या है? अर्नब जी, ये बहुत हम हिमाचल वासियों के लिए तो बहुत शर्मिंदा होने वाली बात है। एक प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार का जिम्मा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े मुद्दे उनके सामने है, लेकिन उसके बावजूद वो समोसे पर इंक्वायरी कर रही है। और मुख्यमंत्री जी का पुलिस हेडक्वार्टर में जाना हुआ, किसी फंक्शन में जाना हुआ, स्वाभाविक रूप से चाय नाश्ता का इंतजाम होता है वहां पर जी।
और 5 स्टार होटल जो जिसका जिक्र किया आपने, वहां से समोसे मंगवाए, लेकिन समोसे जहां पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, कहीं और चले गए, किसी और ने वो समोसे का उपयोग कर लिया जी। और उसके बाद बात ये हो गई कि अगर समोसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन समोसे कहां चले गए इस पर सीआईडी इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की गई और सीआईडी इंक्वायरी के बाद फिर दिलचस्प बात यह है कि 5 जो है वहां पुलिस के हमारे कर्मचारी, उनके नाम उसमें जिक्र किया गया, इनके पास तो इनके पास ऐसा करके सारी चीजों का उसमें जिक्र आया और ये कहा गया कि ये समोसे जहां पहुंचने चाहिए थे नहीं पहुंचे, तो ये एक तरह का ये एंटी गवर्नमेंट जो है एक प्लान है। ये बड़ी हैरानी हो रही है हम इस बात को लेकर के, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को हो गया एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी। तो मेरा सवाल फिर कौशल मुंगटा जी से है। कौशल जी, अगर समोसे का प्लेट जो है या जो बक्से हैं जिनमें समोसे हैं और समोसे के साथ जो भी और आहार था, अगर किसी और ने खा लिया तो क्या बड़ी बात है? अगर सुक्खू जी को समोसे नहीं मिले, ये इतना बड़ा विषय कैसे हो जाता है? और अगर किसी और सरकारी कर्मचारी ने सुक्खू जी के समोसे खा लिए तो इस पर इतनी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्या है? चलिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको नमस्कार, अदब के साथ में उनको नमस्कार भी करता हूं और आपका जवाब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक छोटी सी लाइन से देना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हिंदुस्तान के अंदर या किसी भी राष्ट्र के अंदर, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर राजनीति हमेशा आदर्शों की होनी चाहिए, मूल्यों की होनी चाहिए, उच्च आदर्शों की, उच्च नियमों की और शिष्टाचार की होनी चाहिए। परंतु मुझे बहुत ही हास्यास्पद और बचकाना लग रहा है कि देश का राष्ट्रीय मीडिया जो है समोसे पर डिबेट करवा रहा है। फिर भी आपने जब प्रश्न पूछा है तो मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि डीजी सीआईडी ने भी आज इस बात को स्पष्ट किया है और सरकार की तरफ से भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्रकार की कोई सरकार की तरफ से कार्यवाही के लिए नहीं लिखा गया, ये इंटरनल मैटर था सीआईडी का। अब मुख्यमंत्री क्या कौन सी चीज इंटरनल मैटर थी? नहीं, मुझे बात बताइए। देखिए कौशल जी, मेरी बात सुनिए। आप जो कह रहे हैं ये समोसे पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई ये सीआईडी की इंटरनल मैटर है और मैं आपसे विनम्र पूर्वक बिल्कुल मैं आपसे एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर एक सरकार समोसे को लेकर किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन करे तो क्या सरकार का और कोई काम नहीं है? आपने ये नहीं कहा कि समोसे पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, आपने कहा कि हमारी इंटरनल मैटर नहीं हुई है, सरकार की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो है। क्या हुई? और मुख्यमंत्री को अगर किसी कार्यक्रम में जाना है, वहां पर कोई पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी उनके स्नैक्स के लिए क्या मंगवा रहा है और वर्बली आफ्टर मीटिंग को अगर बोल देते हैं कि भाई जो चीज मंगवाई गई थी वो क्यों नहीं आई, तो इस पर मुख्यमंत्री का इससे क्या लेना देना? वर्बली का मतलब आप कह रहे हैं कि समोसे पर डिबेट हुई। आप नहीं राष्ट्रीय नहीं, मैं ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले आप ये बताइए, आप ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री के वहां पे जो सीआईडी हेडक्वार्टर में उनको समोसे नहीं मिले, इस पर बहुत गंभीर डिबेट हुई कि मुख्यमंत्री को रेडिसन ब्लू के समोसे क्यों नहीं मिले और कुछ नहीं है। नहीं है। तो आप मुझे हिमाचल प्रदेश के जितने लोग हैं रिपब्लिक देख रहे हैं वो क्या कहेंगे कि आज हिमाचल प्रदेश में सीआईडी इस बात की तहकीकात कर रही है कि 5 स्टार होटल के समोसे सुक्खू जी को क्यों नहीं मिले? ये औपचारिक और अनौपचारिक इंटरनल एक्सटर्नल की बात नहीं है। इसमें अर्नब जी, ऐसा मेरा उसमें एक चीज को लेकर के कहना, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ कि रिपोर्ट पुलिस की सीआईडी की रिपोर्ट आती है, ये जो वायरल हुआ है डॉक्यूमेंट, ये सीआईडी की रिपोर्ट है। किस पर? और समोसा गायब हुआ। नहीं, कहां चला आप गया? कह रहे सीआईडी की रिपोर्ट है समोसे पर? समोसे अर्नब जी, में दिलचस्प बात तो ये है कि हैरानी इस बात पर, ये विषय नहीं मुख्यमंत्री जी को समोसा खाना या नहीं खाना, ये तो कोई विषय नहीं है, लेकिन सीआईडी को कोई और काम नहीं रहा है क्या? हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में स्कैम के एक के बाद दूसरा स्कैम हो रहा है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में स्कैम से भरा पड़ा हुआ है, आपके पावर डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उसकी जांच नहीं हो पा रही। लेकिन कौशल जी वापस आइए, आपकी वीडियो कट गई है। कौशल जी आप अपने वीडियो को सीधा कर लीजिए प्लीज। ये बात ये है कि और ये कौशल जी एंटी गवर्नमेंट
और उसके बाद ये साथ में ये बात कहना कि एंटी गवर्नमेंट एक्शन है ये तो बताइए, तो और हाँ, भी विचित्र लग रहा ये कहा, किसने कहा कि सरकार के विरुद्ध कार्रवाई काम की गई है कि किसी ने सुक्खू जी के समोसे खा लिए? ये किसने कहा? कहाँ लिखा है एंटी गवर्नमेंट? मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी के बीच बोलना नहीं चाहता, छोटे मुंह से बड़ी बात करना भी नहीं चाहता, परंतु मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि राष्ट्रीय में हमारे मुख्यमंत्री जी की पीठ तो विश्व बैंक थपथपाता है, हमारे मुख्यमंत्री सुक्खू जी की पीठ तो शांता कुमार जी जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री वो थपथपाते हैं। हमने आपदा में अच्छा काम किया, इस बात पर कभी चर्चा नहीं हुई। तो यहाँ बात तो एक चीज है कि जो इशू क्रॉप अप हुआ, क्या हिमाचल प्रदेश में कोई और काम रह नहीं गया? क्या सीआईडी को यही काम रह गया है? गवर्नमेंट को यही काम रह गया है समोसे पर इंक्वायरी करने का? यहां हिमाचल प्रदेश में आप देखो एक के बाद सीरीज ऑफ डिसीजन अगर आप देखेंगे अर्नब जी, आप देखो टॉयलेट टैक्स कितनी बड़ी एक तमाशा बन गया है पूरे देश भर में। एक तरफ स्वच्छता अभियान चल रहा है, यहाँ पर टॉयलेट गिने जा रहे हैं, 4 हैं तो 100 रुपए देना पड़ेगा, 25 रुपए एक टॉयलेट के हिसाब से। फिर बाद में मुकर जाते हैं कि ये नहीं कहा हमने। और उसके बाद दूसरा ये होता है कि हिमाचल प्रदेश में बसों में ट्रैवलिंग करने के लिए 5 किलो का वजन है तो उसका आधा टिकट, उसका 1/4 किराया लगेगा, इससे ज्यादा होगा तो आधा लगेगा। तो ऐसी चीजों को लेकर के एक और कंट्रोवर्सी और कर दी, और अभी एक नोटिफिकेशन और कर दी हिमाचल प्रदेश में, जहां कहा कि 2 साल से जो खाली पद पड़े हैं वो सारे के सारे अबॉलिश किए जाते हैं। जब शोर पड़ा तो मुख्यमंत्री जी नई नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हम कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके कह रहे हैं। और अब समोसे पर आ गए। अरे काम करने के लिए चुना हुआ है, हिमाचल के लोग चाह रहे हैं कि सरकार बनी है तो काम करे। ये समोसे पर इंक्वायरी का विषय इसलिए गंभीरता का बन गया कि आज से पहले कभी भी पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि इतनी हल्की सोच के साथ काम किया गया है और इतना अपरिपक्व होकर के, यानी कि मजाक बन गया हिमाचल प्रदेश का इन सारे डिसीजन की वजह से। चिंता का विषय तो ये है कि आखिरकार हिमाचल का एक तमाशा बना दिया, जो हमारे सबके लिए जो पीड़ा का विषय है। मैं ऑपोजिशन में हूं। अर्नब जी, अब क्या कहा जा रहा है कि समोसा जो है वो नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये एंटी गवर्नमेंट एक्शन है। अगर हमको समोसा दिया तो ऑपोजिशन को दिया होता तो हम समझ लेते, लेकिन कोई बात नहीं। इस बात को लेकर के इतना शोर डालने की आवश्यकता नहीं थी कि भाई इस पर इंक्वायरी की जाए। बहुत सारे मामले हिमाचल प्रदेश में इंक्वायरी के लिए किए जा सकते थे, लेकिन उस पर इंक्वायरी नहीं हो रही है। लेकिन छोटी सी बात पर समोसे पर इंक्वायरी हुई, ये सचमुच में बहुत हैरानी का विषय। पर कौशल जी, आप इस बात से आप नहीं कह रहे कि समोसे पे इंक्वायरी नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि क्या ये कोई बड़ी बात है कि नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके सीआईडी ने खुद कहा है कि ये अंदरूनी मामला है। इन्होंने नहीं कहा कि ऐसी चीज नहीं हुई। आपके सीआईडी ने कहा है हुई, मगर ये हमारा अंदरूनी मामला है कि सुक्खू जी के समोसे पर किस तरह की तहकीकात हुई। अरे भाई, एक समोसा, कोई समोसे उनके समोसे कोई खा ले। कह रहा हूं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं बिल्कुल दे रहा हूं, मगर ये क्या आप राष्ट्रीय मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं? मैं राष्ट्रीय मीडिया पर चर्चा कर रहा हूं। हमारा इंटरनल मैटर है। बर्बली मैंने आफ्टर मीटिंग कहा था कि भाई अगर कोई चीज मंगवाई है तो क्यों नहीं पहुंची। परंतु रही बात समोसा खाने और खिलाने की, सुन लीजिए अर्नब जी, रही बात समोसा खाने और खिलाने की, हमें विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जनता ने दी। आपके डीआईजी के नंबर 1 अफसर को और कोई काम नहीं है। आपके सीआईडी के सबसे वरिष्ठ अफसर का क्या यही काम है? मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछ रहा हूं, आपके सीआईडी के बॉस का यही काम है कि सुक्खू जी के समोसे कौन खा गया? बिल्कुल, ये बिल्कुल चर्चा का विषय नहीं है। सुक्खू साहब को इसका मालूम ही नहीं था। खाने दीजिए। और आप जो है भाजपा के लोग जो है, देश के अंदर जब कोई मुद्दे नहीं बचते, सुक्खू जी के समोसे कुछ अलग टाइप के समोसे होते हैं क्या? करते हैं। हिमाचल के अंदर जब आपदा आई थी तब कहां थे आप लोग? जब हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे जो है जहाज के अंदर से आप हमारे विधायकों को उठाकर ले जाते हैं, परंतु मोदी जी हिमाचल प्रदेश के अंदर लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ बिजार सिचुएशन। नहीं उठाते। एंड आई विल टेल यू, खटाखट एंड नाउ टॉयलेट टैक्स और समोसे पे सीआईडी इंक्वायरी। Viewers, when I'm back, the 2 big debates of the day, including an absurd plan by the UP Women's Commission. Time for a quick breather. Arnab will be right back with the debate. I don't care for no songs and proses. I don't care for no sweet boys with roses. All
a touch of love. Director, The Taste of Success. अगस्त 2019 के बाद जिस तरह हमें डिसएम्पावर किया गया, ये भी हमारी डिसएम्पावरमेंट का ही एक नतीजा है कि इम्तिहान का शेड्यूल भी माँ बाप और बच्चे बच्चियों की मर्जी के बिना तय किया गया। In the India Today Best Universities 2023 survey, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School Bengaluru. I don't care for no songs and proses. I don't care for no sweet boys with roses. All I want is a touch of love. بالتالي في هذه اللحظات شن العدو الإسرائيلي بالتالي في هذه اللحظات شن العدو الإسرائيلي Republic Media Network headquarters, it's time for Arnab Goswami on the debate.
Goswami on the debate. Ladies and gentlemen, now time for the nation's sharpest opinion. I really regret the fact that I have to begin once again with these visuals, show them again. And this daily drama has gone on too far. Run them full frame for a while, for about 10 seconds, so that you can see for yourself what is going on in the Jammu and Kashmir Assembly. And I repeat once again, all of this would never have happened had we not made the mistake of having elections in Jammu and Kashmir. These politicians in Jammu and Kashmir do not want to serve the people. They do not want to do any work. They just want to fight each other. They want to disgrace themselves. They want to disgrace the country. Ladies and gentlemen, this is a daily occurrence in Jammu and Kashmir Assembly, and you have to decide if you pay your taxes for this. No, I'm not provoking you. I want everyone to be a law-abiding, tax-paying citizen, but I want to say, on behalf of all law-abiding and tax-paying citizens, that we feel really, really let down today. We feel let down that despite our strong views, always supporting the security forces in Jammu and Kashmir, despite our support for the removal of Article 370, despite our support for all those people who have who have in any way, the fact that we have always opposed people who've questioned the sovereignty of the country. We've exposed people like Yasin Malik, like Rashid Engineer. Today we see these same elements take charge on the floor of the Jammu and Kashmir Assembly. If I were to tell you what happened today, there was complete mayhem once again. The PDP leaders were sloganeering, shouting. There's a man called PDP's Wahid Para. He had to be physically taken out of the assembly. The BJP leaders were marshaled out of the house. MLAs for all parties were involved in all-out physical assaults and fights all through the day today. And this is a third consecutive day that we've seen this drama. Why do I oppose it? I oppose it because principally this was all avoidable. Did we not have an unnecessary election and not have an ornamental, decorative Chief Minister, Omar Abdullah, who just wants to feel important, sit there and do nothing and give boring speeches, ladies and gentlemen? We could have had actual governance in Jammu and Kashmir. This assembly will do nothing. This government will achieve nothing. Ladies and gentlemen, there's only going to be an increase in corruption in Jammu and Kashmir because these people have been elected. They'll all want to make money. They want to fight. They will indulge in politics that is disgraceful, that is disrespectful to the country, and sends a wrong image to the international community. Viewers, I have said yesterday that just scrap the assembly and throw out the people who have made it their professional and personal responsibility to create mayhem in the house. Did any of this happen a month back? What were the headlines 2 months back from Jammu and Kashmir? That tourism was going up, that investment was increasing, that peace had returned, that terror incidents had come down. What are the headlines today? Omar Abdullah has lost control. There are drama in the Jammu and Kashmir Assembly. Terror incidents have gone up. Security forces, of course, will never go on record, but they must be feeling really let down by what is happening in Jammu and Kashmir. Viewers, once again, I feel the elections were totally avoidable. But now that we have this assembly, we need to decide, give them time. If they don't change their ways in 1 month, in national interest, scrap the assembly, give complete powers to the security forces and bring back central rule. Let's debate. Slaps, punches, full-on body slams, complete anarchy. Indie parties have dragged J&K Assembly into chaos. Ruckus over Article 370 has taken a violent turn. The pandemonium was set off by a PDP MLA from Kupwara who waved a banner demanding the restoration of Article 370, igniting tensions in the assembly. The show of defiance gave rise to further chaos. As Lenkate MLA Khurshid Ahmed Sheikh, brother of Rashid Engineer, jumped in with a banner demanding the return of Article 370 and release of political prisoners. As these banners went up, so did the tempers. BJP MLAs immediately challenging this provocation rode with slogans of Bharat Mata Ki Jai as confrontations turned violent.
Indie representatives continued to push the limits. Khurshid Ahmed Sheikh charging into the well, but was marshalled out of the house. Yesterday's session saw the same reckless behavior as Indie leaders clashed with BJP legislators, sparking a physical confrontation going as far as grabbing each other's collars. हमारा हक है कि हम डिमांड करें और हमने फिर डिबेट में भी जो है डिस्कशन में भी जो है हमने डिमांड की है कि उस रेजोल्यूशन को टेबल किया जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि बीजेपी के कुछ अराकीन जो है वो सजाद साहब और फयाज साहब पर जो है उनको फिजिकल असॉल्ट करने लगे और इस वजह से जो है हमने बीच बचाव करने की कोशिश की और इस दौरान हमें जो है मार्शल आउट किया गया था. For 3 straight days, the J&K Assembly has spiraled into scenes of violent disruptions. The J&K Assembly has spiraled into scenes of violent disruptions, with Indie parties showing no sign of backing down, putting Jammu and Kashmir's legislative process under siege. Okay, Aditya Gupta of the PDP, I want to start with you. I welcome Shagun Parihar, BJP MLA from J&K, and Sanju Verma, National Spokesperson. Aditya, how long will this drama continue? 3 days have gone on. Aditya, can you hear me? Visuals on the screen, directors. Aditya, can you hear me? He can't hear me. Okay, before I reconnect with him and our producers can confirm that we have his audio, because I have absolutely no word from the PCR, I'd like to go to Shagun Parihar. Shagun, what happened today now? सर, असेंबली में जो दंगल इन्होंने पिछले 4 दिन से चलाया हुआ है, जैसा कि हमारे जो बीजेपी के एमएलएज हैं, इन्होंने हमें बोलने तक का अधिकार नहीं दिया है. हमारे स्पीकर्स बंद कर देते हैं, हम बोलने के लिए जाते हैं तो हमें रुका दिया जाता है. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये असेंबली क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली है? स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं जो हमारे बोलने के अधिकार तक छीन लिए गए हैं. आदित्य, कैन यू हियर मी? Let me go to Sanju Verma, please. Sanju, can you hear me? Yes, I can, Arnab. You've seen these pictures. Does it make you regret that there was an election? Because this is going to be endless. All these parties are competing with each other. All these parties are going to continue to compete with each other on taking an anti-370 position. What was the need for this? This is self-inflicted injury, isn't it? You know, Arnab, I just want to make a couple of points. It was after 6 long years that in October 2024, the Omar Abdullah government finally took charge. We had elections in Jammu and Kashmir after 10 long years. And this is the first election we had this year in Jammu Kashmir after the abrogation of Article 370. Sorry? Please continue. So my limited point is that, while the scenes unfolding out of the Kashmir Assembly in the last 48 hours are absolutely despicable and deplorable, I don't think this is the time to impose President's rule, because I think the Janta of Kashmir, the Janta of Jammu, they want normalcy to return. And I think the best way for normalcy to return and to make governments accountable, transparent, is for the electorate to ask them tough questions. The opposition, the BJP in this case, will ask tough questions to Omar Abdullah and his National Conference and his allies like the Congress. See, that is all good. I don't have Aditya Gupta, but I have Mushtaq Sikandar with me now live, who is pro-National Conference. Mushtaq, now we are going to see this competitive positioning. And the sad part is Omar Abdullah is part of it, Mehbooba Mufti is part of it, this fellow, what's his name, Wahid Para is part of it. This Khurshid Ahmed Sheikh is part. All of you are trying to prove that each one of you is more against 370 than the other. That is all you are doing, and you are creating a spectacle so that you can go and tell people outside that, see, we were taking a more anti-370 line.
This is not going to help anyone, Mushtaq. This is just internal politics going on quite clearly. What you stated is quite blasphemous. You stated that we should... Don't use the word blasphemy so loosely. Yes. It's blasphemous because the Supreme Court has ordered that the elections be held in Kashmir. It was not BJP or RSS, because if it was up to them, they would never have any kind of orchestrated any kind of elections so in that's Kashmir. not called blasphemous. Supreme Court, if I'm disagreeing with the judgment of the Supreme Court, it is not blasphemous. I personally believe there was no need. Please use your words carefully, Mushtaq. Because Indian state never wanted democracy. Really, and I think they were right, because this is what we are getting. Is this democracy? That is the propaganda. Is this democracy? In the Indian parliament, the scenes are like the same. In the previous session of the parliament, the whole opposition was thrown out by the fascist BJP. Can I ask the producers to put the audio of Shagun Pariyar higher up so that I can hear her respond? I'm just talking to my production team. Yeah, Shagun is saying something to you. Shagun, yeah. आप किस डेमोक्रेसी No, it's not about the delay. It's not about the delay, Aditi. ये डेमोक्रेसी है. Yes, please go on. Go on, Shagun. सर, आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जहां पे बीजेपी के एमएलएस को बोलना तक अलाउड नहीं है? हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं. हम असेंबली में बैठे हैं जनता के मुद्दे उठाने के लिए, ना कि 370 का राग लापने के लिए. आप ये भलीभांति जानते हैं कि 370 पार्लियामेंट से पास हुआ है, 370 सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ है. अब 370 लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. आप कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाना बंद कर दें अब. और ये कह रहे हैं, Can I just add to that? Mushtaq, what you are saying is blasphemous. What you are saying is blasphemous because, 1 minute, was 370 not, 1 minute. Playing political tactics to befool the people of Jammu Kashmir. No, how is it befooling the people? Because it was unconstitutionally, undemocratically scrapped by the parliament. When I need to answer that. This man is lying through his teeth. After 2019. This man is lying through his teeth. Jammu Kashmir Assembly is above the Constitution. Jammu Kashmir Assembly is above the Supreme Court. आप खुद को सबसे बड़ा समझते हैं. बड़े अफसोस की बात है. आप देश के संविधान की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप किसकी रिस्पेक्ट करेंगे? जिस जम्मू कश्मीर में आप रहते हैं, वो जम्मू कश्मीर शांति चाहता है, वो जम्मू कश्मीर चाहता है वहाँ के पेरिफेरीज की डेवलपमेंट हो, वो 370 नहीं चाहता. आप जनता को बेवकूफ बनाना बंद कर दें अब. ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक था जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली really? I am not aware about things. Yes, really. You should get your facts correct. No. You should read things. I think you don't have your facts at disposal, and I want to read out the Supreme Court रिजेक्ट हो चुकी है. आप क्या बात कर रहे हैं? आप जाइए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ के आइए पहले. क्योंकि मुसलमान मेजॉरिटी है, उसके साथ हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है. पहले से किया जा रहा है. pulling the Muslim card. अब बीजेपी ओपनली कर रही है. He's playing Muslim card. बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इस तरह से अशांति फैलाएं. आप मुस्लिम कार्ड प्ले कर रहे हैं. आज हमारे किश्तवाड़ में हमारे 2 लोगों को मार दिया गया, एक नजीर और एक कुलदीप. आप ये हिंदू मुस्लिम कार्ड प्ले करना बंद कर दें नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले. कश्मीरी तो रोजमर्रा यहाँ पे राष्ट्रभक्त समाज के लोग रहते हैं. कश्मीरी तो रोजमर्रा है यहाँ पर. आपकी पार्टी की वजह से, जब से आपकी पार्टी गवर्नमेंट में आई, तब से कश्मीरी मर रहे हैं. तो आप उस चीज का जवाब देना. कश्मीरी पंडितों को आपकी वजह से माइग्रेट क्यों करना पड़ा? मेरी वजह से क्यों माइग्रेट करना पड़ा? उनको जगमोहन ने निकाला, अभी तो रिहेबिलिटेट किया कांग्रेस ने उनको. कांग्रेस ने तो रिहेबिलिटेट किया उनको पैकेज देकर यहाँ पर उनके लिए. अच्छा, कांग्रेस ने किया रिहेबिलिटेट, बीजेपी ने नहीं किया. आप मुझसे ज्यादा जानते हैं. Nee, I want to ask you something, Mushtaq, I want to, 1 minute, Sanju, 1 minute, Shagun, I'm speaking to Mushtaq now, and I need 1 minute. Mushtaq, listen to me. Are you listening to me? Obviously, we always listen. You should also have the courage to listen to So the fact is, Mushtaq, you know absolutely nothing about the Supreme Court. I'll tell you why. I'll explain to you why you know nothing. Because there was a challenge to the government's decision to remove 35A and 370, which was dismissed in the Supreme Court in 2019. The Supreme Court dismissed it. Then
there was a review petition put before the Supreme Court, once again, to the Honorable Supreme Court, that please review your decision to dismiss our questioning the removal of Article 370 and 35A in 2023. The Supreme Court for a second time dismissed this, which means the Supreme Court said that the government's decision to remove 35A and 370 was completely valid. Yes, I cannot believe how a person like you cannot be aware of a simple fact like that. One. Second point to you. Ahmed Ayaz, 1 minute. Second point to you. Abhi dekhiye. Now you are complaining about, oh, this, that, whatever. आप बात बताइए, फारूक अब्दुल्ला और ओमर अब्दुल्ला को किसी ने फोर्स किया था कि इलेक्शन फाइट करने के लिए? उनको पता नहीं था कि 370 नहीं है? Exactly. तो obviously, हाँ तो ऑब्वियसली क्या? ऑब्वियसली क्या? यही तो लाना था। अरे पहले तो बहुत नहीं 1 मिनट पहले ये कहते थे जब तक 370 हटाएंगे नहीं इलेक्शन फाइट नहीं करेंगे, मगर लालच और भूख मगर सत्ता की लालच और सत्ता की भूख बहुत बड़ी चीज होती है। Get your facts correct. I have put you in your place. उन्होंने 370 की बात नहीं की, because they are also aware कि unless and until यहाँ से रेजोल्यूशन पास नहीं होता है, पार्लियामेंट नहीं करता है। ठीक है, तो आप मत करें, आपको किसी ने फोर्स किया था इलेक्शन फाइट करने के लिए? Arnab, can I quickly come in? Sanju Verma is on the debate responding. Yeah, Sanju. Then who should fight? Only BJP. You know, Arnab, now I heard this man, Mr. Mushtaq, थोड़ा शांत हो जाइए। अभी मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी, अभी आप थोड़ा मेरी बात सुनिए। You know, this man said from the National Conference that, oh, Article 370 was, revoked unconstitutionally. So let me just read out very quickly in 30 seconds from the Supreme Court verdict of 11th December 2023. The 5-judge bench of the Supreme Court said this: the declaration issued by the President, as in Ram Thakur, exercises the power in Clause 3 of Article 370 in a culmination of the process of integration. Thus, we do not find that the President's exercise of his powers under Clause 3 of Article 370 were mala fide. We hold the exercise of presidential powers to be valid. And then in 10 seconds more, the Supreme Court said, concurrence of the state government was not required to apply provisions of Constitution using Article 371D. So the President of India taking the concurrence of the union government was not mala fide. Basically, in simple language, the Supreme Court upheld the abrogation of Article 370, upheld the presidential ordinance issued by Ram Thakur in 2019, upheld the fact that paragraph 8 of the Instrument of Accession of 1947 executed by Maharaja Hari Singh clearly says that since the Instrument of Accession was signed by Maharaja Hari Singh, Kashmir lost the element of sovereignty and was fully integrated with the Indian Republic on the 26th of October 1947. Ahmed Ayaz. No, Ahmed Ayaz, this is, you see, I'm speaking for the people, opening the lines for 2 minutes. I'll take one caller, viewers, one caller on this. Ahmed Ayaz, I cannot take this anymore, and I'm speaking for the people of this country. We are seeing this daily violence, lots of violence. People bleeding, getting hit. Tomorrow somebody will have a fracture, somebody is injured. People are standing on benches, people are throwing things at each other. Somebody is pulling somebody from the tie, somebody is beating each other up. ये कैसी गुंडागर्दी चल रही है? Or in the middle of all this, Omar Abdullah is sitting quiet. He can do nothing. He has no control. He has absolutely no control. He doesn't know what to do. He stands. That was not a speech by him. It was a long complaint. Does he realize वो complaint किसको कर रहे हैं? वो खुद मुख्यमंत्री बन चुके हैं. अरे हैंडल कर सकते हो तो करिए. रोना धोना किसने करने को कहा है? Ahmed Ayaz, this is, I as a tax-paying citizen feel appalled कि my taxes are paying for this. इनको रोने धोने के अलावा और विक्टिम कार्ड खेलने के अलावा कुछ आता नहीं है। Pointed out that what has been happening in the Assembly of Jammu and Kashmir is really unfortunate and rather condemnable, because these people who have been elected with the hope that they will see that the people of Jammu and Kashmir are relieved of the difficulties they have been undergoing. You see, with all hopes, the people have elected them, and people have attached hopes with them.
and instead seeing to it that what is the relief they could give the people, the difficulty they could sort out, they could come their rescue, and they have been resorting to the physical assaults on each other and forgetting about... No, but 1 day is okay, 2 days is okay, 3 days. Ahmad, there's 3 days and tomorrow again they'll do this. In a democracy, you'll have to agree. They're going to kill each other like this. Is the supreme. And what is Sajad Lone doing? Exactly. What is Sajad Lone doing? No, that's really unfortunate, because these being lawmakers and doing all these drugs in assembly. Unfortunate is not a point, sir. Can I get a call? Where they could put forth their point very conveniently, very reasonably, and they had all options and people were waiting for the government that speak out whatever they could, like to whether in favor of the legislation or in opposition or whatever in support. No, the point is, Ahmad, they asked Mushtaq. I think before the elections, G20 event was held in Kashmir. Before the elections, tourism went up by 15-20%. Private investment worth 81,000 crore rupees was received as investment proposals. Health insurance was given to 16.36 lakh families. Development projects of 7,000 crore were introduced. Agricultural development of 5,000 crores was introduced. मतलब मुश्ताक सब कुछ ठीक चल रहा था और ये ड्रामा कोई जरूरत नहीं चल रहा था. Corruption वहीं था. Corruption was there, and security still lies with the center. It's not with Umar Abdullah. अच्छा, you will take all the benefit, no response. Corruption के लिए ही तो हम बोल रहे हैं कि आप पे सेंटर का चेक होगा, आप पे ऑडिट होगा, आपके रिकॉर्ड्स चेक होंगे. आप क्यों रोक रहे हैं उसको? Obviously, सेंटर को किसने रोका था? हमारे कश्मीर में पेरिफ्रीज में डेवलपमेंट ही नहीं होती थी अभी तक. आपकी बात कर रहे हैं, कश्मीर के पेरिफ्रीज में जाइए. Okay, Bhubaneswar is calling from Jammu. Bhubaneswar ji, are you there? Yes. Bhubaneswar ji, are you there? Yes, I am here. What is going on, Bhubaneswar ji, in your state now? What do you think? The leadership of Kashmir speaks about only Kashmirians. When state is Jammu and Kashmir. And Kashmiri, some of the Kashmiri leadership don't like Jammu people. They are doing so on name of democracy. It's a blunder they are doing. And the way they are treating Jammu MLA is very wrong. We have got full respect for Kashmiriyat, and Jammu also exists. They forgot the Jammu. And Jammu population is much higher than Kashmir. Voters are higher than Kashmir, but seats are very less. Sad scenes, Mr. Bhubaneswar. Sanju, I don't know how long this will continue. At some point, center will have to decide. It is Arnab ji, it is not a question of Jammu. Arnab, I want to make a quick intervention here. Numbers behaving. Yes. The behavior of, it's a question of the behavior of the members. I want to make a quick intervention. I just want your audience to know one thing. This entire narrative that Prime Minister Narendra Modi is anti-Muslim, Kashmir mein pichle 10 saalon mein kuch hua nahi. Let me tell you that the Chenab Bridge, the work started on that by Atal Bihari Vajpayee way back in 2002. Between 2004 and 2014, कांग्रेस की सरकार थी, आपके अलायंस पार्टनर की सरकार. 2022 में 20 सालों के बाद, thanks to Prime Minister Narendra Modi, the Chenab Bridge became a reality. The Chenani Nashri Tunnel was started in 2011 and Congress abandoned it. 2017, Chenani Nashri Tunnel became a reality. Today, let's be very clear. Be it the Delhi-Katra-Amritsar Expressway, be it the Srinagar Internal Ring Road, be it the Delhi-Pathankot Expressway, these things are coming to fruition thanks to the Modi government. In 2022, after more than 30 years, Sanjeev ji, we are talking about what's happening in the श्रीनगर के लाल चौक पर एक निशान, एक विधान, एक संविधान, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे थे और नरेंद्र मोदी Anyway, viewers, I tell you, रियलिटी में बदल रहे हैं. I tell you, Mushtaq Ahmad, whatever you can do, you do. Someone convey to Omar Abdullah that he has to take charge, he has the majority, he has to run the assembly. की कॉल पे चलती थी, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की कॉल पे चलते थे आज तक.
ये पहली बार यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शांति का दौर चल रहा था, पहली बार यहाँ पे स्ट्राइक्स नहीं होती थी, हमारी इंडिया की हुकूमत चल रही थी, लेकिन ये चाहते हैं वो स्ट्राइक्स का दौर फिर से चलता रहे। And could you not take a point, if at all you want to talk against the resolution being passed by the National Conference, could you not make a strong point? How can she make a point? No, you are attacking Shagun Pariyar. 1 minute, Sanju. How can Shagun make a point when these men are fighting like that? You are attacking Shagun. That is what I say. I don't need how. बोलना तक allow नहीं कर रहे हैं। आप शगुन को allow करेंगे बोलना? वो खड़ी थी कल वहाँ पे बैठा है वो। That how much is being spent on them? How much is being paid to see that the session is? सर हम चिल्ला के बोल रहे थे, आपने हमारे स्पीकर तक बंद कर दिए। One more caller is coming in, viewers. ये तस्वीर देखिए। नहीं, इसमें you can't blame Shagun Pariyar, who's a young BJP MLA. मैंने तस्वीरें देखी। You tell me, वहाँ पे शगुन परियार मारामारी कर रही थी कि ये सारे एनसी पीडीपी के लोग, आप शगुन परियार को अटैक कर रहे हैं। Shagun Pariyar is the number of the house. It's not only Shagun Pariyar. I am talking Louder. about all. I can't See, hear. they are the elected honorable. One more caller. And VG Patak is calling from Surat on the terrible situation in the Jammu and Kashmir Assembly. My last caller. Yes, Mr. Patak, what do you think? Yeah, Mr. Arnab, good evening. Good evening, sir. Good evening. What I'm seeing for last 3 days on television. Hello? Yeah, very much. I can hear you, Mr. Patak. Go on. Because, what I see on television for last 3 days happening in J&K Assembly is completely a shame on NC, PDP and Congress. I mean, I can't imagine that these parties are worth even governing a panchayat. I don't know how they have been elected and what they are doing in the assembly. It's a shame on the whole nation, not only Kashmir. It totally is. Really shameful situation. I feel very sad. Mr. Patak, I tell you, that I just feel, on this I disagree with the central government. There was no need to have elections and bring this upon us. I agree with सब कुछ ठीक चल रहा था. You need strong central rule with lots of powers to security forces. Wanted elections or not, please understand that we had president's rule for 10 long years. Have another 10 years. क्या हो जाएगा? Where is the rule? You can't have president's rule for 10 more years. At some point, Let you it need be. to have elections and better than this, no? Sanju, it's better than this, no? In terms of normalcy. इससे तो अच्छा होता. मैनिफेस्टो में जो मुद्दे लगाए थे, वो सिर्फ एक 370 वापस लाना नहीं था. इन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार देना था. इन्होंने सड़कों की बात की थी. इन्होंने 6 सिलेंडर की बात की थी. ये उन मुद्दों पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर? Okay, viewers, I want to thank everyone there tonight, and I can tell you once again, before I go, Mushtaq, to disagree with the views of the Supreme Court is not called blasphemy. Please choose your words very carefully before you make such a statement on the program. But I feel very sad. If you have Omar Abdullah's ear, please tell him to do something. He can't be looking so helpless. Ladies and gentlemen, my second debate tonight is on how the most common word used by India Alliance leaders these days to describe women leaders from the other side is mal. This is not just a dirty and misogynist and sexist word, ladies and gentlemen. It shows their mindset, that they think that women are objects that can be bought and sold. That's what you mean by mal. Saman, mal, ladies and gentlemen, such terrible words. Now used by Mamata Banerjee's most trusted Firhad Hakim. Let's debate. A relentless fight for justice. An unshakable spirit against tyranny. This is Rekha Patra, BJP leader and the face of the Sandeshkali women's movement. On Wednesday, Mamta's right-hand man, Firhad Hakim, found himself at the helm of a political backlash when he referred to Patra as quote-unquote mal. আরে নামটা বলেন নাই দাঁড়িয়ালা তার নাম হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী কাঁদছিলেন মেরে সন্দেশ খাদিকে মহাবতের কি কান্না বাবা কি কান্না আপনাদের এখানে প্রার্থী দিয়ে দিল সন্দেশ খালি সেই ভদ্রমহিলা কোথায় এই তো হাজি নুরুলের বিরুদ্ধে কেস করেছিল
হেরে গিয়ে হেরো মাল কয়েক লক্ষ ভোটে হেরে গেল, তারপরে কেস করলো। বিজেপি কেস জানে, মানুষের কাছে আসতে জানে না। Mamta's minister could not duck from Republic cameras for his misogynistic remarks. ফিরোজ বাবু একটি প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে আপনি যে মাল বলে সম্বোধন করেছেন সে বিষয়ে কি বলবেন? মেয়েদেরকে কি এভাবেই কি মেয়েদেরকে অপমান করা যায়? আপনি কি ক্ষমা চাইবেন ফিরোজ বাবু? কিছু বলবেন ফিরোজ বাবু? আপনি কি ক্ষমা চাইবেন? Facing tough questions, he attempted a foolish U-turn today. হেরো ভূত, হেরো মাল, এটা চলতি ভাষা। কি রেখা পাত্র, ওনাকে কিন্তু আমি ভদ্র মহিলা বলে সম্বোধন করেছি। আমি কোনো মহিলাকে অপমান করব এটা আমি ভাবতেও পারি না। আমরা কেন বলেছিলাম এটা বিজেপি 3 লক্ষর বেশি ভোটে হেরে গিয়ে কোর্টে গেছে, বিজেপি আসলে বিজেপিকে মাল বলেছে। But can this alibi really shadow the sexist mindset of the TMC leader? Watch again. সেই ভদ্রমহিলা কোথায়? এই তো হাজি নুরুলের বিরুদ্ধে কেস করেছিল। হেরে গিয়ে হেরো মাল, হেরে গিয়ে হেরো মাল, হেরে গিয়ে হেরো মাল। আমরা কেন বলেছিলাম এটা বিজেপি 3 লক্ষর বেশি ভোটে হেরে গিয়ে কোর্টে গেছে, বিজেপি আসলে বিজেপিকে মাল বলেছে। The call for accountability could not be louder. Rekha Patra has now questioned Chief Minister Mamta. সেই উত্তরটা তো আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই দিতে পারবেন, জান কি না। ওনার ইন্ধনেই তো আজকের ফিরাজ হাকিম এরকম একটা কথা উনি প্রকাশ্যের মঞ্চে উনি বলেছেন, এরকম একটা ভাষা দিয়েছেন যে ভাষাটা রাজ্যের নয়, পুরো গোটা পশ্চিমবঙ্গের মা বোনের জন্য অসম্মানদায়ক। এখানে এটা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ইন্ধনেই এটা হয়েছে। এর উত্তর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কখনোই দেবেন না। যদি দেবার হতেন আরজিকরের ঘটনাটায় উনি কখনোই দিয়ে দিতেন। And so tonight we ask, how irked is the Indie with women in politics? Has Indie's discourse hit rock bottom? And for how long will Mamta remain mute over her Man Friday's objectification of Rekha Patra? Pro-TMC Manishankar Chatterjee, spokesperson of the Uddhav Sena, Chandrasekhar Jha. By the way, his party, leaders have also called others Mal, and Priyanka Tibrewal joining Sanju Verma. Manishankar Chatterjee, what is the meaning of Mal? When you call a woman Mal, matar maneta ki? Mal. Meaning of Mal, the Mal. Meaning. No. See, who comments towards the Rekha Patra? That is a different phenomena. No, that is the issue. I want to know what is the meaning of the word mal. When you call a woman mal, what does that mean? When you say this woman is a mal, what do you mean by calling a woman a mal? Not woman mal. Yes, woman mal. He did not say woman mal. He did. He spoke about Rekha Patra and called her mal. No. He explained thereafter. No. His explanation was rubbish, nonsensical. I have seen that comment. It was clear he was calling Rekha Patra mal. What is the meaning? When you call a woman mal, what do you mean? The BJP leaders. No. What are you saying? You are also saying. You are also saying right now. I am asking you, when you describe a woman as mal, what do you mean? Priyanka Tibrewal is on the debate. Priyanka with Manishankar Chatterjee. Casual language. Do you use such casual language for your daughters and sisters at home? Are they mal? Do you call them mal? Because when you are saying it's a casual language. See, Arnab, please listen to the sentence of Farhad Hakim. He said in his explanation that this is a chalta language. It's a casual language. So does he use the same casual language at home? He is an habitual offender. He is an habitual offender and he uses the same language
for any women who's fighting against TMC. He used language like this for me when I was contesting, where he said, "Hey Priyanka ke, what happened after Lok Sabha election? Who is this Priyanka? You went to the Lok Sabha. You filed a ask the case same question against me. to women at your home? Whether the women at your home are meant for eating or cooking? Now you tell us. You filing a case before the court? This is the nature which is there in them, deep within them, and which is followed by their TMC leaders and leaders on the ground. That is why we hear that women are being raped, beaten, stripped on the road every day. Now, in the last month only, there are more than 3 incidents which have taken place. One was on the 15th of September. What happened? Another village leader of TMC, he stripped a woman and she was beaten to death on the road. Why? Because they said that she was doing certain witchcraft. So where do they get this kind of a courage from? Because the mayor of Kolkata, says that women are mal. Please keep quiet, have some manners. When a woman is speaking, please keep quiet. This is the kind of manners which you have. Keep quiet, you are a woman. Why not? At the time of Lok Sabha election, you filed a several case before the High Court. Why not you go to No, you just said. Sanju, did you notice what he said to Priyanka right now? He said, you keep quiet, you are a woman. You heard what he said? He said, you keep quiet, you are a woman. Manishankar Chatterjee of the Trinamool says, you keep quiet, you are a woman. She has the right to silence. I've shown you number of times. Why did you say, you keep quiet, you are a woman? What did you mean by that? Women should be quiet and called man. Gentle process. You are allowing the woman. You do not have. That is the reason. You told me to say something. Priyanka started to say something. You are not stopping her. You are not stopping her. It is not your duty to stop. What kind of face do you face them at home? How you deal with the talk show? How, Mr. Arnab? Not just that, Arnab. It is not just that. Number of incidents which are happening. What do their MLA say? That Sharia law will be implemented in West Bengal. They say that, Muslim Rashtra, whatever laws they have, they will implement the same. Now, this is towards what they are working. And lose the cases. Not have any kind of empowerment. Go to the court. Why NCW taking action? Let us humiliate her. Why NCW took action? Why you are not filed a case before the court? That is so. Then why are you quiet when the chief minister is a woman? What is your capacity? And you take the fame of saying that only chief minister it is approved before the court. What is your capacity? One more thing I want to say. 1 minute here. One minute. Sanju, let me add one more thing before I bring Chandrasekhar Jha also into the debate. When he was asked, why did you use the word mal? He said, Firad Hakim said, this is cholti bhasha, which means casual language. Who said? Firad Hakim said. Said to the BJP, not to the person. Not to the person. Said to the BJP. I am also saying BJP is a mal. I am also saying BJP is a mal. I am also saying BJP is a mal. Sanju Verma also on the debate right now, ladies and gentlemen. Every single time in the last 1 week, we've seen opposition leaders, women leaders being called mal, and that's what this debate is about. Sanju Verma. Thank you. Arnab, first and foremost, let's get this very clear. China NC was called imported mal by Uddhav Thackeray's close buddy Arvind Sawant. In Jharkhand, Congress leader Irfan Ansari, a close friend of Rahul Gandhi, called a widow Sita Soren as rejected mal. And then now, Firhad Hakim, Kolkata mayor, calls Rekha Patra, who was the candidate from Bashirhat in Lok Sabha 2024, as loser mal. And not only that, because Rekha Patra lost to Haji Nurul Islam, he calls Haji Nurul Islam as hero mal. And he also makes a mockery of the Sandesh Khali victims by saying, Kya hua? Basically, if you translate his Bengali speech into Hindi or English for the benefit of your audience, he says that BJP went about trying to curry favors, but no rapes or gang rapes happened in Sandesh Khali. This was a figment of BJP's wild imagination, which basically means that you are trying to undermine the credibility of Sandesh Khali victims. You are giving a free run to the likes of Haji Nurul Islam. He may have won the Bashirhat elections, but he's still facing trial for the 2010 Deganga riots. And most importantly, do you remember a man called Shah Jahan Sheikh?
Yes. He was arrested thanks to intervention by the Kolkata High Court for 58 days. Mamta Banerjee kept protecting Shah Jahan Sheikh, the key perpetrator of the Sandesh Khali horror. My limited point is this. Where is Mahua Moitra today, Arnab? Where is Sagarika Ghosh today? Where is Sushmita Dev today? These are the women who keep saying, oh, Samvidhan khatre mein hai. Mahua Moitra, who was actually indicted by the Parliament's Ethics Committee, said that the Sandesh Khali victims are doing drama. They were given 2,000 rupees each by the BJP to level rape allegations against Shah Jahan Sheikh. Look at the audacity of Chandrasekhar Jha. Sagarika Ghosh also ditto said the same thing. संदेश खाली तो रैप हुआ नहीं, ये तो बीजेपी की वाइल्ड इमेजिनेशन का एक No, Chandrasekhar Jha, this use of the word mal, 1 minute. A week back, your senior leader, Arvind Sawant, very close, very close to Uddhav Thackeray, works very closely with him. He said BJP leader Shaina NC is an imported mal. Not only that, he said there are two kinds of women. Original mal or imported mal, which means all women are mal. Mal means saman or object which can be bought and sold. A few days after that, Trinamool Congress, another top leader, Firhad Hakim, very close, right-hand man of Mamta Banerjee, says, Rekha Patra, the face of the Sandesh Khali protest is mal. Right? Hero mal, which means mal who has lost. But why mal? Why doesn't he call her a losing candidate? Why mal? Why mal? You will say something. Manishankar Chatterjee? Why mal? Is that the only word you know? You don't know how to speak properly. Political agenda. No, if anybody was to call women in your family mal, would you sit there and accept it? You are not. If anybody was to call women in your family mal, would you accept it? Is that the language to use? And I'm asking you, forget 30 seconds. Chandrasekhar Jha, you tell me, if anybody was to call women in the Uddhav Sena mal, would you be quiet about it? See, anybody's mal. What if somebody calls Uddhav Thackeray? But he did not have no such language. And very clearly he apologized. And he said that it was not intended to be represented. What is intended? He has said there are two kinds of women, original mal and foreign mal. Imported mal. He did not intended to say. Not intended kya bhai? Of course it's intended. No, it was not intentional. It was not intentional. Of course it was intended. He explained it very. No, it was not intended. Only when there was an FIR against Arvind Sawant, he apologized. Arvind Sawant apologized under compulsion. Arvind Sawant did not apologize voluntarily. Very clearly, and it was apologized in public. So there is. Has your leader Uddhav Thackeray now second thing is that okay, this is such a right now leader of the opposition in Bengal is Suvendu Adhikari is calling for legal action on the mal controversy. Ladies and gentlemen, we'll invite Firhad Hakim on the show and try and get an apology out of him. Manishankar Chatterjee, if people don't know how to speak properly, go and tell them to learn. And please use this casual language at home. Every day speaking. When Mr. Modi used to address. And every day, Manishankar Chatterjee, when you people talk like that, remember that there is a very powerful channel in Bengal called Republic Bangla, which will expose you properly. Thank you very much, ladies and gentlemen. Now to an absurd suggestion by the chairperson of the UP Women's Commission, Babita Chauhan, who, in order to make the world safer for women, says women going to the gym must not have male instructors. She says another way to have safety for women is to make sure that no woman ever goes to a male tailor and no male tailor takes measurements of any woman. Now, ladies and gentlemen, what's this? What's going on here? Babita Chauhan will join us. This is what she did. Female hairstylist for women customers. Female dance teachers for students. Female tailors for women clients. These are just few of the many bizarre proposals made by the UP State Women's Commission. This comes as a part of what they call an initiative to protect women.
This is what Chief of UP Women's Commission had to say in her defense. ये कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई ऐसी चर्चा का विषय नहीं है। ये मुझे लगता है कि हम महिला आयोग है हमारा और हम महिलाएं हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, तो इस नाते थोड़ा सा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ये हमने प्रस्ताव लेके आए हैं। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो जेंट्स ट्रेनर के साथ कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि ट्रेनर उनके पास है ही नहीं, महिला ट्रेनर ही नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब सारी जगह महिलाएं काम कर रही हैं, हर ऑफिस में है, हर जगह महिलाएं हैं, तो जिम में महिलाएं क्यों नहीं हैं? जिम में ट्रेनर क्यों नहीं है महिलाएं? The rationale given by the commission for this bizarre proposal was alleged harassment of women in gym. The radical list of suggestions was ratified in a meeting held on October 28th. While the Uttar Pradesh Women's Commission asserts that these measures are aimed at enhancing safety and empowering women, one might argue that these steps may not be the solution to the deeper systematic problems of harassment and inequality. We have a one-on-one. Shaista Ambarji, welcome. She's a women's activist from Kanpur. Babita Chauhan is chairperson of the UP Women's Commission. Ms. Chauhan, can you hear me? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चौहान, बबीता चौहान जी? जी बिल्कुल आ रही है। मैम, ये सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने कहा है कि कई सारे आपने प्रपोजल्स दिए वुमेन सेफ्टी के लिए, मगर उसमें से ये भी प्रपोजल है कि किसी भी महिला का हेयर कट कोई पुरुष ना करे, which means no woman's haircut should be done by a man. Why should a woman's haircut not be done by a man? इसमें आपको सेफ्टी की क्या एंगल है इसमें? ऑल इंडिया मुस्लिम अर्नब जी, पहले मैं आपको बताऊंगी कि शायद आपने वो पेपर नहीं पढ़ा जो मैंने भेजा है। इसमें ये चीज़ ही नहीं है कि जो महिला कटिंग की बात की जा रही है। मेरा जो प्रस्ताव है वो सिर्फ ये है कि जो हमारे पार्लर हैं, आ रही है आपको आवाज़? जी आ रही बोलिए। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आवाज़ आ रही है जी। मेरा ये कटिंग का तो कहीं, हेयर कट का तो कहीं जिक्र भी नहीं है उसमें। मेरा सिर्फ ये था कि जो ब्यूटी पार्लर हैं उनमें अगर हम जो ब्यूटिशियन है, जैसा आपने भी देखा होगा भाई, आपने तो ग्राउंड जीरो से अपनी पत्रकारिता की है, आपको भी पता है सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर से आए हैं, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि जब जो पार्लर है उसमें मेकअप जो आर्टिस्ट होते, पहले अक्सर ये होता था कि महिला जो पार्लर थे उसमें जनरली महिलाएं होती थी, और आज एक ट्रेंड सा चल गया है पिछले 1.5-2 साल से कि उसमें भी पुरुष काम करते हैं, उसमें भी लड़के सारे काम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसा मैंने कहीं नहीं लिखा है, ना मेरा कोई लिखित में है, ना कोई आदेश है कि जिसमें महिलाएं पुरुष कटिंग नहीं कर सकती है। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है पुरुष भी काम करें, लेकिन उसमें महिलाएं भी काम करें। स्पेशली अगर मैं बात करूँगी तो ये है कि जो मेरा जो मेन फोकस था, वो आपने भी देखा होगा कि इतनी रील्स, इतने वीडियोस, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं कि जो हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप होते हैं, आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि उनको भी लड़के कर रहे हैं। स्पेशली जो छोटी बच्चियाँ हैं जिनकी शादी होने वाली है, उनको तैयार कर रहे हैं, उनको कपड़े तक पहना रहे हैं, उनको साड़ी और लहंगे तक वो कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि और भी चीज़ें हैं, हेयर कट करें, चाहे वो पेडिक्योर, मैनिक्योर या और भी बहुत सारी चीज़ें अपना कराएं, लेकिन जब ये महिलाओं को कपड़े पहनाने तक की बात आती है, बच्चियों को कपड़े पहनाने की बात आती है, साड़ी या लहंगे पहनाने की बात आती है, तो मुझे लगता है कि वो महिलाओं से ज़्यादा अच्छे तो नहीं पहना पाते हैं, और ये ना तो हिंदुस्तान के संस्कार हैं और ना ये यहाँ की। अच्छा, एंटी संस्कार है। अच्छा, शाइस्ता अंबर जी, मैं इस पर अपनी राय नहीं दे रहा हूँ इस वक्त। शाइस्ता अंबर जी, बबीता चौहान जी हैं, वो चेयरपर्सन यूपी महिला आयोग की, वो कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति नहीं है कि कोई पुरुष किसी महिला का ड्रेस बनाए या फिर ड्रेस पहनाए या मेजरमेंट ले, और ये सेफ्टी के पहनाए वो अलग बात है, पहनाना एक अलग बात है। अच्छा, आप जी शाइस्ता अंबर जी। जी जी मैं बबीता चौहान जी की इन बातों से मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और लेकिन साथ में ये भी है कि अगर वो जो टेलर हैं, अगर उन गांव देहात में हैं, कहीं ऐसी जगह हैं जो छोटा सा रोज़गार चला रहे हैं
और वो सिवाय खुद के रोज़गार चलाने के और कोई इतना साधन नहीं है कि वो महिला टेलर को बुलाएं और उनको भी सैलरी दें। तो ये तो मर्ज़ी की बात है कि अगर कोई महिला टेलर नहीं मिल रही है तो वो लड़कियां या औरतें अपना सूट सिलवा नाप नहीं दे सकती हैं, तो वो अपने सूट खुद दे दे कि भाई इस नाप के सिल लें। और दूसरे ये कि ये बात भी मैं इस पे सहमत हूँ और उनकी बात को भी मैं समर्थन करती हूँ कि जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या जिम ट्रेनर हैं, ऐसे लोग बहुत सारी ऐसी औरतें टैलेंटेड हैं जो साथ में औरतें करवा सकती हैं, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। नहीं, मगर इसमें नियंत्रण क्यों? नहीं, अगर ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है बबीता जी, जिम आप ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ कोई मेल जिम ट्रेनर ना हो, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। आप पहले मेरी पूरी बात समझिएगा फिर इसको करिए। देखिए, मैंने कहा है कि जिम ट्रेनर भी हों, डिपेंड करेगा महिला की चॉइस पे कि वो किसके साथ जिम करना चाहती है, लेकिन ऑप्शन के तौर पे वहाँ महिला भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पुरुषों के साथ नहीं ट्रेनिंग करना चाहती हैं, जो जिम नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो वहाँ कर रही हैं। मैंने ये नहीं कहा, वो उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है कि वो करना चाहें। अच्छा, और जहाँ तक टेलर का सवाल है, तो मैंने ये नहीं कहा कि टेलर महिला होनी चाहिए। मैंने कहा टेलर अगर आपको अच्छा लगता है, आपके कपड़े अच्छे सिल रहा है, तो जरूर रखें, लेकिन मेजरमेंट के लिए लड़कियां रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप जानते हैं जब ड्रेसेस बनती हैं, जब कपड़ों के नाप लिए जाते हैं, तो वो कितना क्लोज चीज़ें हो जाती हैं। तो वहीं जब बैड टच की बात आती है तो वहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होती हैं। यही बात मैं कहना चाहूँगी पार्लर की बात, कि जब बच्चों को साड़ियाँ पहना रहे होते हैं, जब मेकअप कर रहे होते हैं वो एक कमरे में, और उसकी वीडियो बनाकर जब वो वायरल करने के लिए होते हैं, तब वो बच्चियों को ब्लैकमेल करते हैं। वो क्योंकि बच्ची भी नहीं चाहेगी या उसके पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि उनकी बच्ची को कोई पुरुष जाए और वो कपड़े पहनाए या साड़ी पहनाए। तो जब ये वायरल करने वाली बात होती है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को ब्लैकमेल करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी चीज़ों को थोड़ा सा मीडिया में मिसअंडरस्टैंड किया गया। आप कह रहे हैं आपने इसको ऑप्शनल रखा, कंपल्सरी नहीं की, क्योंकि जो मीडिया में जो खबर आई है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि कोई पुरुष किसी महिला के कपड़ों की टेलरिंग नहीं करे, कोई पुरुष किसी महिला के हेयर कटिंग नहीं करे, मेजरमेंट ना ले, उसमें भी ये ऑप्शन है। हाँ, उसमें भी ये ऑप्शन है। अगर स्वेच्छा से महिला चाहती है कि मेरा मेजरमेंट पुरुष ही ले, तो वो लेने को स्वतंत्र है। वहाँ हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? लेकिन जो नहीं चाहते, जहां ये बैड टच वाली हमारे पास शिकायतें आती हैं, वहां भी एक ऑप्शन होना चाहिए कि वहां महिला मेजरमेंट के लिए रहे। Now this is interesting. बबीता जी, ये इंटरेस्टिंग है आपने अपनी बात जो रखी। And viewers, if you are seeing this viral story going around that the UP Commission for Women is saying men should not tailor women's clothes or cut women's hair, the UP Women's Commission chief is on my program saying that is not the case and it has been misrepresented. I am putting both sides out. Tell me what you think. Viewers, we had a very comprehensive show this evening. Babita ji and Shaista ji, thank you very much. My big concern continues to be with the situation in Jammu and Kashmir. We have seen an appalling situation in the Jammu and Kashmir Assembly. I want to end full frame with the pictures because what I want the news to do and what this debate to do is to make you think about issues that concern us all. And today the visuals I want to play, viewers, are the situation in the Jammu and Kashmir Assembly. We can't be distant from what's going on. We have a stake in this democracy. We believe in the future of this country. This is not what we deserve. I'll see you tomorrow, but the debate continues in case you missed the 8 o'clock debate on the other side of a very necessary and short break. Goodbye. Time for a quick breather. Arnab will be right back with the debate. Co-powered by Jaguar Bath & Light. I don't care for no songs and proses. I don't care for no sweet boys with roses. I'm too busy, baby, making plans on how to get me one of them man and man.
touch of love. In the India Today Best Universities 2023 survey, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School Bengaluru. Director, The Taste of Success. I don't care for no songs and proses. I don't care for no sweet boys with roses. All I want is a touch of love. I know many people feel like we are entering a dark time. But for the benefit of us all, I hope that is not the case. But here's the thing, America, if it is, let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars. To the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed. But please know it's going to be okay. On the campaign, I would often say, when we fight, we win. But here's the thing. Sometimes the fight takes a while. That doesn't mean we won't win. That doesn't mean we won't win. The important thing is don't ever give up. Don't ever give up. Don't ever stop trying to make the world a better place. You have power. You have power. And don't you ever listen when anyone tells you something is impossible because it has never been done before. You have the capacity to do extraordinary good in the world. And so to everyone who is watching, do not despair. This is not a time to throw up our hands. This is a time to roll up our sleeves. This is a time to organize, to mobilize, and to stay engaged for the sake of freedom and justice and the future that we all know we can build together. Look, many of you know I started out as a prosecutor, and throughout my career, I saw people at some of the worst times in their lives. People who had suffered great harm. B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या भारत को केवल एक कवर वाला संविधान दिया है? संविधान का अपमान किसी ने किया है तो ये लाल किताब वाले राहुल गांधी ने किया है. Co-powered by Jaguar Bath and Light. In the India Today Best Universities 2023 survey, India's #1 ranked universities in various streams are